everyone, I am Dr. Prince Gupta, Consultant Joint Replacement and Arthroscopy Surgeon, Manipal Hospital Gurugram. आज मैं आपको मेरे एक पेशेंट से मिलवाना चाहता हूं जिनका नाम ऋषभ रॉय चौधरी है। इनकी नी की सर्जरी हम लोगों ने 2019 में की थी, जिसमें इनका ACL लिगामेंट टूटा हुआ था, जो कि इनका स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलते हुए टूट गया था। ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन। क्रिकेट खेलते हुए इनका लिगामेंट इंजर हो गया था एंड ही प्रेजेंटेड टू मी आफ्टर 1 month फॉर द डिस्कशन एंड टू प्रोसीड फॉर द सर्जरी। इनका पहला क्वेश्चन ये था, जो इसमें और घबराहट थी इनको थोड़ी, कि ये बाद में कभी स्पोर्ट्स खेल पाएंगे या नहीं। ये सारी चीज़ें उनको समझाने के बाद हम लोगों ने उनकी सर्जरी करी। सर्जरी वॉज डन इन मार्च 2019। आज उस चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली 3 साल होने को आ रहे हैं एंड ही इज़ हैप्पी अबाउट इट। ये आज हॉस्पिटल में आए थे किसी और काम के लिए, किसी और चीज़ के लिए आए थे एंड ये मुझसे मिलने के लिए आए। तो मैंने आज उनको यही चीज़ समझाने के लिए आपको बताया है। आप बताइए मिस्टर ऋषभ। पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम ऋषभ रॉय चौधरी है। I am born and brought up in Jharkhand, but I am working in Maruti Suzuki India Limited in Gurgaon. So I am very much passionate about sports, particularly cricket. So once I came to know that my company is also organizing cricket tournaments, so I also decided to participate in that. So when I was playing my first game, so while bowling, I got my knee injury. I slipped and I got a knee injury. So for continuously 14 days, मेरा knee जो था वो पूरा sore था, and I thought that if I give time, the soreness will reduce. But after 14 days also there was no improvement. So I decided to go to doctor. So I went to my company doctors. So Neeraj Katuja sir is my company chief medical officer. So he suggested the name of Mr. Prince Gupta. So I went to him. So he first of all told me to do all the preliminary checks like MRI and everything. So after doing MRI, it was found that I have a 2nd degree tear. So he told that there are 2 options. First option is that if you do not want to play in life and if you want to lead a simple life, so one option is that you can go to physiotherapy, build the strength with that 2nd degree tear, and then you can lead your normal life till the rest of the life. But if you want to play like before, then you have to go for surgery, because 2nd degree tear will not give you that strength to hold on for sports. So I was very fearful because सर्जरी के नाम से हम सब डरते हैं कि पहले जैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम खेल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, सिचुएशन इवन वर्स भी हो सकती है। तो हमें मतलब बहुत डर था। तो इन्होंने समझाया कि दिस इज नॉट अ वेरी मेजर सर्जरी, ये बहुत ही कॉमन हो चुकी है फुटबॉल में, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। सो आई went and discussed with my football friends also. Many of them had ACL injuries. So it was finally concluded that it was an ACL ligament tear, 2nd degree. So उन्होंने भी बताया कि फुटबॉल के टाइम में भी बहुत लोगों को ACL ligament tear हुई है, and most of them had a successful surgery. So I finally decided that I should also go for surgery. So immediately next day I had a surgery, and after the surgery we needed 6 months of very disciplined physiotherapy. After 6 months of very disciplined physiotherapy and exercises, after 1 year, we will be completely able to live a normal life like before. We can jog, we can run, we can play like before. So, after 1.5 years of completing my surgery, after doing all the required physiotherapies and exercises, आज जब कंपनी फिर से क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए, 2 बार कंपनी ने ऑर्गेनाइज किए, आई पार्टिसिपेटेड इन दोस टूर्नामेंट्स, आई प्लेड एंड आई परफॉर्म्ड रियली वेल, एंड आई डिडंट इवन केम टू नो दैट आई इवन हैड अ सर्जरी. सो इट इज जस्ट लाइक बिफोर. इनसे मिलवाने का कारण यही था कि आप लोगों को अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है, अगर कभी ACL लिगामेंट में इंजरी होती है, तो उस चीज़ को इग्नोर ना करें और डॉक्टर को जाकर मिलें, और उस चीज़ से सर्जरी के द्वारा अगर ठीक हो सकती है चीज़ तो उसको करवाइए। उस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही छोटी सर्जरी होती है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं हम इसको, या की होल सर्जरी आप बोल सकते हैं। तो इन चीज़ से घबराने की बजाय उस चीज़ को ट्रीट करवाइए। इस बारे में आपको अगर कोई भी और सजेशन लेना हो या कुछ और लेना हो तो आप मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।